हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही बेहतरीन सवाल बनाने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 के मेंस में आ चुका क्वेश्चन है। ये आया है इसलिए मैं नहीं बनवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इसलिए बनवा रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है ये आपको सीखने को मिलेगा। विशेष करके एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है वो सीखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर समझेंगे। An insulated 0.75 kg copper container containing 0.2 kg of water। जैसे देखो यहाँ पे एक कॉपर कंटेनर है, ये इंसुलेटेड है, ये कॉपर कंटेनर है। सपोज दैट एज्यूम, आपके रेफरेंस के लिए एक डायग्राम में बना दे रहा हूँ। ये आपका एक कॉपर कंटेनर है, ये कॉपर कंटेनर इंसुलेटेड है। इस कॉपर कंटेनर के अंदर 0.2 kg ऑफ वाटर फिल्ड है, 0.2 kg ऑफ वाटर फिल्ड है। सपोज दैट ये हमारा 0.2 kg ऑफ वाटर फिल्ड है। अब यहाँ पे बोला बोथ इन इक्विलिब्रियम एट 20 डिग्री सेल्सियस, बोथ इन इक्विलिब्रियम 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब थोड़ा सा डेटा भी लिख लेते हैं साथ के साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मास ऑफ कॉपर कंटेनर, मास ऑफ कॉपर कंटेनर दैट इज इक्वल टू 0.75 kg, 0.75 kg। mass of water content, mass of water content is 0.2 kg, 0.2 kg। equilibrium temperature, both are at equilibrium temperature, T initial is equal to 20 degree Celsius। An experimenter now places 0.05 kg of ice at 0 degree Celsius in the container। सपोज दैट यहाँ किसी एक्सपेरिमेंटर ने एक लंप ऑफ आइस को यहाँ पे रख दिया जिसका मास 0.05 kg है, 0.05 kg है। तो इस लंप ऑफ आइस का पैरामीटर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मास ऑफ आइस जो है वो 0.05 kg है और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। The specific heat of copper is 0.418 किलोजूल पर kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है 0.418 किलोजूल पर kg। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये दिया हुआ है 333 किलोजूल पर kg, 333 किलोजूल पर kg। Now question is asked what will be the temperature TF at equilibrium condition when all the ice has melted। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ये आइस मेल्ट करेगा, जब ये आइस मेल्ट करेगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा यहाँ देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है 4.187 किलोजूल पर kg, तो वो भी लिख लेना बेहतर रहेगा कि आपके पास डेटा रहे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 4.187 किलोजूल पर kg। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। फाइनल टेम्परेचर निकालना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें इस प्रोसेस के दौरान होगा क्या। इस प्रोसेस के दौरान ये जो आइस होगा वो सबसे पहले मेल्ट करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और फिर उस वाटर का टेम्परेचर कुछ रेज करेगा। इसमें हीट की एब्जॉर्प्शन होगी, लंप ऑफ आइस में हीट की एब्जॉर्प्शन होगी और ये हीट प्रोवाइड कौन करेगा, तो ये कॉपर का कंटेनर और ये जो ऑलरेडी कंटेंट वाटर है वो प्रोवाइड करेंगे। समझ में आई बात। क्योंकि यही दोनों हायर टेम्परेचर पे हैं तो ये दोनों इस हीट को सप्लाई करेंगे। ये धीरे 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 इनका टेम्परेचर डाउन होगा। यहाँ पे जो लंप पिघल रहा है फिर वाटर में बन रहा है उसका टेम्परेचर हाई होगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे हीट का एक्सचेंज बंद हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जहाँ पे तीनों एक टेम्परेचर को अटेन कर लेंगे। ये कंटेनर इंसुलेटेड है तो बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाली, इसी के अंदर जो भी कार्यक्रम होगा वो होगा। तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को हम लगाते हैं तो मान लेते हैं कि जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है, लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइनल
इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड फाइनल स्टेज एंड फाइनल इज TF। ये हमारे पास TF है। यहाँ पे इसने दे भी रखा है टेम्परेचर TF, तो उसी के चलते मैंने यहाँ पे TF लेट किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानता हूँ तो इस सिस्टम के बाहर जो आपको यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, सराउंडिंग दिखाई दे रही है, सराउंडिंग देखो, सराउंडिंग से सिस्टम का कोई इंट्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये इंसुलेटेड है, हीट एनर्जी का कोई इंट्रैक्शन नहीं है। तो जो भी एनर्जी होगी वो इसी के अंदर यूटिलाइज होगी। तो समेशन ऑफ ऑल हीट इंट्रैक्शन शुड बी 0। आपको पता है हीट एनर्जी जब लिबरेट करती है किसी पर्टिकुलर सिस्टम से तो माइनस साइन यूज किया जाता है, जब किसी सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है तो प्लस साइन का यूज करते हैं। तो लेट अस यूज दिस एंड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक है हमारे पास मास ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर into specific heat of water into temperature, final temperature of water minus initial temperature of water that is 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन। ये यहाँ से हीट लिबरेट हो रही है, मैंने माइनस साइन यूज कर लिया। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूँ मास ऑफ वाटर मैंने देख लिया। अब हमारे पास आता है मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। mcp delta t is the formula, mc delta t, तो that is simply I am using the same, तो that is TF minus 293। यहाँ से भी एनर्जी लिबरेट कर रही है, माइनस साइन यूज हो गया। ये दोनों जगह की एनर्जी कहीं ऐड हो रही है, दोनों जगह की एनर्जी कहीं जाके ऐड हो रही है। और वो एनर्जी कहाँ पे ऐड हो रही है? तो इस आइस के साथ दो प्रोसेस हो रहा है, एक मेल्ट कर रहा है आइस और दूसरा यहाँ पे आइस का जो कंटेंट वाटर है उसकी टेम्परेचर 0 डिग्री से रेज कर रही है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम कंसीडर करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को हम कंसीडर करते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास हो गया, इसको आप ऐसे समझ लो, आइस को रेज कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास हो गया प्लस साइन और दिस में भी इक्वल टू मास ऑफ आइस into latent heat, mass of ice into latent heat plus mass of ice into specific heat of water, क्योंकि जब मेल्ट हो जाएगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, into final temperature minus initial temperature 0 डिग्री सेल्सियस, that is 273 केल्विन। ठीक है, अब हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। इस माइनस साइन को इनसाइड ले लो ब्रैकेट, तो ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या है? मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, देखो मास ऑफ वाटर यहाँ पे हमने ले रखा है 0.2 kg, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 0.2 kg into specific heat of water, specific heat of water is given 4.187, 293 minus TF, मैंने माइनस साइन को अंदर ले लिया। यहाँ भी सिमिलरली माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा। मास ऑफ कॉपर हमारे पास हो गया 0.75 इंटू 0.418 into 293 minus TF is equal to mass of ice is 0.05
and specific latent heat of fusion is 333 kilojoule per kg Kelvin, that we have written. Now plus kilojoule per kg, okay, plus mass of ice, that is 0.05. Since now it has been melted after absorbing the latent heat of fusion, so this will be equal to, let me write here so that it will be clearly observable to you. Mass of ice 0.05 into specific heat 4.187 into delta T, and that is TF minus 273. So this data we have. Now we have to solve this equation. Okay, so let us solve this. We have in one bracket we have 293 minus TF. Let me mention the same, 293 minus TF, and I will solve all the things outside of the bracket. That is 0.2 into 4.187, this is equal to 0.8374, 0.8374 plus 0.75 into 0.418, 0.75 into 0.418 is equal to 0.3135, 0.3135 is equal to 0.05 into 333, that is equal to 16.65 plus 0.05 into 4.187, 0.05 into 4.187, this is equal to 0.20935, 0.20935 inside the bracket TF minus 273. So solving to the next step, we will have 293 minus TF, and now this bracket will be solved. 0.8374 plus 0.3135, this is equal to 1.1509 is equal to 16.65 plus 0.20935 TF minus 0.20935 into 0.20935 into 273, this is equal to 57.15. okay, minus 57.15. okay, am I right? 57.153 or 1525, let me write the same. Now if I solve it, so what I will get, next step 1.159. so let us move all the variables to one side and all the constants to one side to get the perfect solution of this question, and this will be better, that 1.1509 TF minus 0.20935 TF is equal to 16.65 plus sorry, it will be minus, that is equal to minus 57.1525 minus 1.1509 into 293. Let me solve that.
1.1509 into 293. This is equal to 337.2137. So let me write that 213. So now very easily we can solve 1.1509 plus 0.20935 1.36025. This will be 1 point minus of 1.36025 TF is equal to 16.65 minus 57.125 minus 337.213, and the answer is minus 377.688. So here we have got the value of final temperature. This minus sign will be cancelled, and we will have the value of 37688 divided by 1.36025, that is equal to minus 277. The minus sign has been already cancelled, so we will have 277.66 Kelvin. In degree Celsius, if I write, so this is equal to 4.66 degree Celsius. So we have got the final temperature of the system at equilibrium. This we have got. Now the second part of the question is compute entropy generation during the process. Entropy generation during the process, joule per Kelvin. Okay. So for doing the same, we have to understand something, that is entropy. Very basically, thermodynamics is a study of energy, entropy and exergy. So here energy we have calculated, we have used. Now we are using entropy. We have to determine the entropy. That's why this is the beauty of the question. These two terms are coming. That's why I have selected this question. So what is entropy? Entropy in a very little form, if I am going for second question, so TS is defined as dq divided by T. Now this dq is what? This dq is c dt. If I have the mass, so this will be mc dt, and divided by T, that is ds. If you determine the total change by doing integration, so simply what you will get change in entropy is equal to mc. This dt upon T will be integrated to log T, and log T1 minus T2, that is equal to what? Log TF minus TI, I can say that. So that is equal to what? That is equal to log TF upon TI. So this is the basic differentiation, the basic derivation, basic formula that will be utilized for solving this question. So delta S we have to calculate. So we will go component wise. Component wise means what? Means we will calculate the entropy change of copper separately, the entropy change of water, and the entropy change in this case. There are two cases over here. One is melting of the ice and other is
what? Other is the melted portion of the water. The temperature of melted portion of the water is raging. So here, if you will categorize this, so there are three components. One is copper container, other is water, and other is ice. So now let us calculate the entropy one by one. Entropy one by one. So first of all, I will like to calculate the entropy change of what? Entropy change of copper. Entropy change of copper means mass of copper into specific heat of copper into logarithm of final temperature of water in initial temperature of water. Now be very clear that here temperatures are to be used in Kelvin. Absolute temperature should be used. So mass of copper is given 0.75. Specific heat of copper is also given, that is given to be 0.418, if I am right. Yes, 0.418. So this is 0.418. In previous portion you have calculated the final temperature in Kelvin, that is 277.66. 277.66 divided by the initial temperature, that is equal to 293 Kelvin. So let us solve this by using this calculator. 0.75 into 0.418, that is equal to 0.3135. 0.3135. Well done. Now we have to calculate log this. So suppose that 277.66 divided by 293, this is equal to this, and log 0.947. Now let me take log 0.947. If I have done, I have got the value log 0.947. Absolutely, I have done that, done the same. I have got the value 0.0537. So let us solve it directly. That is equal to, it is not working. This is equal to minus 0.0537. 0537. So now if you multiply this to 0.3135, what you will get? You will get 0.016. Okay, so let me write minus 0.016. Now the value is kilojoule per Kelvin. This is the entropy change of copper. Our solution is not completed yet. We have just calculated the entropy change of single component, that is copper. Now let us calculate the temperature, the entropy change of the copper container. Copper container we have calculated the water. The entropy change of water. Entropy change of water is what? That is mass of water into specific heat of water into logarithm of final temperature of water minus initial temperature of water. So mass of water is given in this 0.2, if I remember correctly, 0.2 kg. Okay, so 0.2 kg. So this is 0.2 into 4.187 into logarithm final temperature we already have, that is 277.66. 277.66 divided by 293. I have already got this value, the logarithm of 277.66 divided by 293. I have already solved. I will not do the same calculation again and again.
So simply if I solve, I will get 0.2 into 4.187 into 0.0537 is equal to 0.044 0.044 0.04496, but this will be negative here, kilojoule per Kelvin. This also we have calculated. This is entropy change of already content water. Now the third portion is very interesting. One is the melting portion of the ice, and other is that portion of ice is raising some odd temperature. So that if we will solve, we will get the total entropy change if we will add all the entropies. So delta S of ice portion of water, that is mass of ice. Here mass of ice into latent heat, this is happening at a constant temperature, that is 0 degree Celsius, and after that the temperature of water is being raised, that portion of ice. So that will be solved by this formula, that is logarithm of final temperature minus initial temperature, and that is nothing but 0 degree Celsius. So this we have to do very carefully. So mass of ice is given 0.05, the latent heat is given 333, temperature 273, that is 0 degree Celsius, melting is being done. Mass of ice is 0.05, specific heat is 4.187, logarithm of final temperature is 277.66, and initial temperature is 273. So this is the beauty of this question. Here you can see I have used the two processes. One is melting, the phase is changing at constant temperature, that's why this formula has been used. And after that, once the phase has been changed, this portion, the water, the temperature of water is raising, that's why this formula has been used. So calculate it. We will have 0.05 into 333 we have already calculated during the calculation. 16.65 was the value. So being not repetitive in the calculation, I am calculating it directly. 16.65 divided by 273, this will be 0.0609 0.0609 plus let me solve this. 0.05 into 4.187, 0.05 into 4.187, this is equal to 0.20935. This also we have already calculated. 0.20935 0.20935 into logarithm of, let me do the same, this also we have to calculate. 277.66 divided by 273, the value is 1.101 1.017017, or if I take the logarithm of this value, this is 0.016, this will be 0.0609 plus 0.20935 into 0.016. So if you will solve, a final answer of change in ice entropy is equal to
0.0609 plus inside the bracket 0.20935 into 0.01016. okay, this is equal to 0.064. okay, 0.064. so this is the change in entropy of ice. According to question, what we have to calculate? We have to calculate entropy generation. So entropy generation will be the summation of all the entropies. So entropy generation is equal to entropy change of copper plus entropy change of water plus entropy change of ice. So let us do the same. Entropy change of copper I have already calculated, that is minus 0.016 minus 0.016. okay, plus entropy change of water also I have calculated, that is minus 0.04496 minus 0.0 minus 0.0 minus 0.04496 44. okay, let us approximate the value. So here 449, so that will be 45. okay, plus ice 0.064. So now what we will have, 0.064 minus 0.045 minus 0.016. so entropy generation is here 0.003. am I right? 0.003 kilojoule per Kelvin. So this is entropy generation of the process. So we have solved this second portion of this question. Now moving to the third portion. What will be the minimum work needed by the stirrer to bring back the temperature of water at 20 degree Celsius in kilojoule? At 20 degree Celsius in kilojoule. Now if we have to bring the temperature of water to 20 degrees Celsius, so what we should do? Let us understand this. How this will be solved. So moving to next portion of the question. That what will be the amount of so actually amount of energy if you are applying something, if you are increasing the temperature, to some amount of energy is required, and if you are doing some kind of work is a higher grade of energy, so that will be there will be 100% transformation into that particular increasing temperature. So if we use this concept, so change in energy will be the required amount of the work to be done by the stirrer. So simply by using mCp delta T, you will be able to calculate the work required by the stirrer. This I am leaving to you. This part I am leaving to you because you already have learned this much. So
Let us end the session now, and if you have any problem, comment. I will solve the third portion also, but very clear, this concept is very easier. You can just understand that amount of work done, amount of work required to raise the temperature will be equal to amount of energy required to raise the temperature. So simply, if you will apply this concept, you will be able to solve the third portion of this question. Okay, thank you for now. We will learn more concepts related to this particular subject. Thank you.